Hello, good morning. Hi, I'm Ajay Bhartiya, and already we learnt about trigonometry, formula of trigonometry, right? तो आज हम क्या करने वाले हैं? That those given formula we are going to apply in proof of a trigonometry, right? जो बच्चों को मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है ट्रिग्नोमेट्री बोलते ही वो प्रूफ बोलते हैं ना, तो उनको हो जाता है कि यार छोड़ दो बस। तो मैं आज आपको वो वाली मेथड बताने जा रहा हूं कि वो आप एक बार पढ़ के एक्साइटेड हो जाओगे और बाद में बोलोगे नहीं यार ये तो बहुत इजी है। बट बिफोर दैट आई से दैट मैथमेटिक्स इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट। आप सीख लोगे, राइट? सीखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना, यू कैन नेवर बी कॉन्फिडेंट। सो माई जीनियन सजेशन इज दैट कि देखो मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको अप्लाई भी करना। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रूफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, जस्ट जॉइन मी एंड जस्ट फील अमेजिंग proof of a trigonometry and way of trigonometry. See you. Okay, already I write up here 6 to 7 sum to solve by this method. Okay, but before that, what is the method? जो मैं वो कौन सी मेथड में बताने जा रहा हूँ कि जो आपको बहुत मजा आएगी और पता भी चल जाएगा, मतलब इजी है। तो ये कुछ चीजें, कितने पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट, कोई भी सम हो ना आपके पास, कोई भी सम, एनी सम यू कैन सी दैट, जस्ट कन्वर्ट इनटू इन साइन एंड कॉस फॉर्म, कोई भी सम। ओके, सो कन्वर्ट, फर्स्ट टर्म कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस। कोई भी आपको सम दिखे ना, उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये क्या रहेगा पता है आपको? फर्स्ट यू गेट कॉन्फिडेंट एंड धीरे धीरे, ये मेथड लंबी होगी लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे। सेकंड थिंग इज, व्हाट इज आफ्टर साइन एंड कॉस यू डू टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर वगैरह लिखते हैं, एलसीएफ भी आप बोल सकते हो उसको। थर्ड, आफ्टर एलसीएफ इट मे बी अप्लाई आइडेंटिटीज, अप्लाई आइडेंटिटीज। आप ये वे करते जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, राइट? अप्लाई आइडेंटिटीज। फोर्थ, यूज expansion or factorization, okay, this is SOP, we can say that SOP of a proof of a trigonometry. And fifth, अगर कुछ नहीं हो, आप देख रहे हो कोई सम देख रहे हो, यार ये तो कुछ ही नहीं हो रहा है, नहीं साइन कॉस में तो ऑलरेडी दिया है, ना फैक्टराइजेशन हो रहा है, ना एलसीएम हो रहा है, तो अब क्या करें सर? तो सबका एक लास्ट हम शस्त्र जो यूज करेंगे उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, वो अस्त्र है। इट्स कॉल्ड एज अ रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइज द टर्म। ये कब आएगा? जब कुछ भी ना हो, यू फील दैट यार कुछ हो ही नहीं रहा है सब में, अब क्या करें? कुछ जब ना हो तब ये होगा बस। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज, we are applying all the rule, we are going to apply all the rule in each and every sum, and we see that really all sum follow this rule. Yes, first question is 1 minus sin square into sec square theta is equal to 1. Write down in notebook. First sum is 1 minus sin square theta into sec square theta is equal to 1, have to prove.
So I'm going to take here LHS is equal to 1 minus sine square theta into sec square theta. So what is first rule? Just remind that. First rule is that convert into sine and cos. Can we convert here any term in a sine and cos? See here. देखो, every teacher has a different way. Teachers are masters and they can solve any way of any trigonometric proof. Matter is that कि आपको कितना आ रहा है, राइट? आप वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ टीचरों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड बता रहा हूँ कि वो बेचारे मतलब अभी शुरू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे वो। तो कि कोई टीचर ये देख के या बच्चा बहुत जिसने प्रैक्टिस कर लिया वो तो सीधे सीधे बोलेगा सर ये हो गया, तो मैं उनके लिए भी नहीं बता रहा। जिसको डिफिकल्ट पड़ रहा है, जो मतलब जिसको सीखना है बाय स्टेप तो वो ये सीख सकते हैं। So 1 minus sine square, I am just applying here all my SOP, standard operating procedure, into sec ka. What is the formula of sec? That you convert in a sine or cos, whatever. Okay, so we know that sec theta is equal to 1 upon cos theta. So here we can write 1 upon cos square theta. So 1 minus sine square theta into 1 upon cos square theta. Same, right? First term completed. Check. Take LCM. Here it is necessary of LCM where you can see where you can take your LCM. No LCM, right? Check third position. Apply identities. See any identities here. You can see any identities. You can also see here. Seen here. 1 minus sine square into cos square, right? So that we are going to apply here. 1 minus sine square is equal to cos square theta into 1 upon cos square theta. Okay. So cos square theta cancel. So we can say that 1 is equal to R and S. एक बार आ जाएगा, है ना? If you once learned, you do your method. But आपकी प्रोसीजर करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक फंडा सीखना पड़ेगा. And you try to apply. This is my all mathematical function. You can see that every sum you can do for this SOP. So second, see, second is cos square theta into 1 plus tan square theta. Cos square theta into 1 plus tan square theta. Second, cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to 1. So what is LHS? LHS is equal to cos square theta into 1 plus tan square theta. Okay. Remember, which is first term? Convert into sine and cos. Okay. So this is already in cos, so we can't convert it in a sine cos. Put it like that. Okay. 1 plus. Can you convert tan theta into sine and cos? What is the formula of tan theta? So tan theta formula is tan theta is equal to sine theta upon cos theta. Okay, so what we can write here? Sine square theta upon cos square theta. You can also apply here identity, but I am not going to directly apply any way. I am not going to do this. I am going to step by step convert it sine cos, then LCM, cos square theta. Okay, see here. After conversion of in a sine cos, you are going to take a LCM here. What is LCM? Cos square and 1. So LCM is just cos square theta. So you can take here cos square theta. So cos square theta plus sine square theta. After LCM what? After LCM we can see that what apply identities, then expansion and factorization. So LCM, after LCM, can you use identities? Yes sir, cos square theta plus sin square theta is a 1.
Here we are going to apply cos square theta. All sums follow this my rule. Okay, they obey my this rule. So cos square theta will be cancelled. So answer is 1. Clear? Okay. So हमें इससे कॉन्फिडेंस मिलता है. वाह यार सर हम भी कर रहे हैं कुछ क्या प्रूफ, राइट? ओके. Third question is. Third question. Cos square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta. यही करते हैं, राइट? क्योंकि वो बाद में ज्यादा टाइम जाता है. So third question. Cot square theta. Sorry, cot नहीं. Cos square theta plus 1 upon 1 plus cot square theta is equal to 1. So I think you written that SOP, standard operating procedure for a proof. Already you written in your notebook. LHS. Write down LHS. Okay. What is first method? Convert into sine and cos. Okay. So cos square theta plus. You can't convert it now. So convert here cot square, right? Cot ka formula. What is the formula of cot? Cot theta is equal to cos upon sine. Okay. 1 plus cot का फॉर्मूला होगा cos square theta upon sin square theta. Okay. C procedure. After conversion of sin and cos, you have to follow LCM, right? Check here. You can use your LCM. What is LCM? Sin square theta and 1's LCM is what? Sin square theta. So put here sin square plus cos square. So cos square theta plus 1 upon here LCM is a sin square theta, so you put here sin square theta plus cos square theta. Okay, right? Then what happened? Just put it on a numerator. Why? Because it's a denominator of a numerator. Sorry, it's a denominator of a denominator. See, your sin square is a denominator of a denominator, so it goes on a numerator. So cos square theta plus this sin square goes to numerator. So 1 into sin square is a sin square theta upon sin square theta plus cos square theta. Okay. We already taken a LCM. Now third point is what? Third point is that use identity. Check it. Can you use your any identities? Can you use your identities? Yeah. Sin square plus cos square is equal to 1. Yes, good. So cos square theta plus sin square theta upon sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. So what we have now? Cos square theta plus sin square theta. Also you can apply here sin square plus cos square is equal to 1. Right? So we get RHS. So if you follow this rule, if you follow this rule, any sum you can apply all the rules one by one. You can see that we complete it, right? So today I just completed here 3 sum, right? You complete it in a notebook, all 3 sum here. You can do yourself, right? In next video we will try to do more sum by this method, and we can see that really it's fruitful to us or not. See you. Bye bye. Tata.